Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Textbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well. देरी नहीं करते हुए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हम लोग जब आपके मास्टर क्लास में मिले थे तो हम लोगों ने ब्रीफली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्विकली कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने डॉरिस लेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर द कैनपस नॉवेल्स, राइट? कैनपस एट आर्गस, तो वो कैनपस वाला आपको याद हो गया है, या डीएच लॉरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए। We also looked at questions like questions related to, of course, your Virginia Woolf, जैसे between the acts, और हम लोगों ने फाउंडेशन बैच को भी रिवाइज किया था, जैसे आज हम लोग कर रहे थे फैनशॉ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हाउथॉर्न, and Marble Fawn the last important work, because it didn't do really well, so he was also thinking what to do, कैसे वो in a lot of his writings, particularly when he's writing prefaces, he's talking about that he's the writer of romances. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी हैं. गुड इवनिंग दीक्षा, सिमर, सोनाली, शबनम, विष्णु, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. चलिए देरी नहीं करते हुए आज मैं आपको एमपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करवाऊंगी. ठीक है, जो एमपीपीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. यस, ग्राहम ग्रीन, द कैथलिक नॉवेल्स, एब्सोल्युटली राइट दीक्षा, बिल्कुल सही. सो आई होप आप लोगों ने वो सारी चीजें रिव्यू कर ली होंगी. आज का जो एजेंडा है, हम एमपीपीसीएस, राइट, एमपीपीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को करेंगे, और इसमें 140 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे दे दूंगी. तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप अच्छी तरह से उस पीडीएफ को कवर कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली गोइंग ओवर द पीडीएफ ऑल टुगेदर. ठीक है, तो आज का आपका एजेंडा क्या रहने वाला है मोटा मोटा. आज का व्हाट विल बी आवर मेन एजेंडा, एक बार उसको देख लेते हैं. सबसे पहले तो आई अनाउंस द लीडर बोर्ड. जो आपका आज का मास्टर क्लास का लीडर बोर्ड है उसको आई विल बी अनाउंसिंग. ठीक है, आपका जो मास्टर क्लास का लीडर बोर्ड है, दैट इज समथिंग दैट आई विल बी अनाउंसिंग, ताकि आप लोगों के पास वो लीडर बोर्ड भी आ जाए. सो दैट विल ऑफ कोर्स बी आवर एजेंडा. वी विल आल्सो बी क्विकली रिवाइजिंग. मैंने आपको कल भी बोला था, जो अभी तक आपकी चाहे वो मास्टर क्लासेस हो, ठीक है, चाहे वो आपकी फाउंडेशन बैच की क्लासेस हो, चाहे वो आपकी यूट्यूब की क्लास हो, प्लीज आप बार बार, जब तक यू विल नॉट रिवाइज, जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, it will not be impactful at all. Rather have strategies to actually put it together. और हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टेस्ट भी करते रहेंगे. ठीक है, today's leaderboard, देवाश्री, श्वेता, पद्मा, आयुषी, राइट, नयाना, सोनाली, राइट, जो आपका क्वेश्चन था, the minutes that you were able to see, रानी कुमारी, आदित्य चित्राला, देवशीष दास, राइट, सुप्रतिम, all of these people were part of your leaderboard. Good evening रानी. तो अच्छी तरह से मोमेंटम मेंटेन रखिएगा, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. सो रेगुलरली आपके मास्टर क्लासेस पे वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. कल के क्वेश्चंस मास्टर क्लास के काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. वी विल बी सॉल्विंग अ गेट वर्कशीट. ठीक है, कल जो आपकी मास्टर क्लास में होगा, वी विल बी सॉल्विंग अ गेट वर्कशीट. ये मैंने आपकी गेट की पूरे एक वर्कशीट बनाई है, जो आप एज इट इज देख पाएंगे. लास्ट टाइम भी जो हम लोगों ने गेट वर्कशीट्स करी थी उसमें काफी हेल्पफुल रहा था. गेट में काफी पैरेलल्स देखे गए थे, बिकॉज टेक्निकली देयर इज नो रॉकेट साइंस. उसमें कुछ चीजें हैं, उन्होंने गेट का सिलेबस इज एक्चुअली द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव, दे वेरी वेल डिफाइंड. तो गेट की वर्कशीट हम करेंगे, दैट विल हेल्प यू. ओके, गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग कस्तूरी. सो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली जॉइन इन, बिकॉज दैट विल बी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, अब क्विकली रिवाइज करते हैं. आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर. अ प्रॉफिट इज अ सियर, नॉट एन आर्बिट्ररी डिक्टेटर. ये सुई जेनेरिस विलियम ब्लेक ने लिखा था. अगेन आई एम सेइंग, हर एक मास्टर क्लास जो आप अटेंड करते हैं, या हर एक अगर कोई हम क्वेश्चन बैंक की क्लास कर रहे हैं, प्लीज बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन, प्लीज बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन योर नोट कंपाइलेशन. मैं बार बार आपको बताती हूँ, या तो आप यू कैन एक्चुअली यूज plain sheets of paper, compile it properly. That is also something that you can do, or you can use your notepads. So if you want to probably use your notepads, please feel free to use your notepads. आपको जो strategy ठीक लगती है आप उस strategy को use कीजिए. But the only thing what we are trying to tell you is that make sure that you are definitely capturing. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके answers capture नहीं हो रहे हैं. You should certainly capture your answers. That is something which is very important. ठीक है, I hope you remember Dallin Thomas का Fernhill 9. When is it coming? I even told you the date. तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए. Fernhill is named after the Welsh farmhouse where he was spending his vacation altogether. Okay, so please keep that in mind, ma'am. Could you please send the Telegram channel link in which you put the PDFs? Fatima, ये आज I will be sharing the PDF. ठीक है, you can find it on both the Telegram platforms, Neerja ma'am textbook as well as English Literature Hustlers. ठीक है,
जो आपका पीडीएफ होगा वो इसका पीडीएफ नहीं, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो हम लोगों ने कंपाइल किया है एमपीपीसीएस का विद योर आंसर कीज, वो मैं आपको भेजूंगी, ठीक है? तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। आई होप यू रिमेंबर फेमिनिज्म एंड मैजिक रियलिज्म, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की मास्टर क्लास में कवर किए थे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट जब तक यू विल नॉट रिवाइज, जब तक यू विल नॉट रिव्यू, जब तक you will not cover, it will not settle in well in your mind. So it's very important for you to cover, it is very important for you to actually cover it in greater detail. ये बहुत ज्यादा important हो जाता है, ठीक है? तो please remember, याद है accident in the hot air balloon, यान मैक्यूवेन, enduring love, couple का नाम also we spoke about. So I hope you are able to keep that in mind, that how in 1999 यान मैक्यूवेन्स enduring love is coming. So then reviewing, and ये भी आपका when we are talking about सन 87 का किस्सा, that is from the year of 1857, अजीजुल नीजा का जो कैरेक्टर है, जो त्रिपुरारी शर्मा बना रहे हैं, she forsakes her profession as a courtesan and she becomes a soldier, ठीक है? So please remember that Paul Ricoeur, hermeneutics of suspicion. So again I'm saying, again I'm emphasizing, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे, you will actually not be able to take it forward. So that is the most important tip of the day. Please keep on reviewing concept of poetic justice, that vices are the ones that will not be appreciated, virtue will be appreciated. That is the concept of poetic justice, okay? So please remember that, please keep that in mind, and do remember what is not clear, Maya, what is not clear. Okay, so please keep that in mind. Now quickly coming on to your MPPCS questions, जल्दी से आपके MPPCS questions को एक बार अच्छी तरह से देखते हैं in quick succession. जल्दी से बताइए, what is the correct answer? What does the term mythos means? मैंने आपको ये सारा even classroom program में लिखवाया था. I'd also made you write, right? I've also made you write all of these things. जल्दी से बताइए, what is the correct answer over here? What in your opinion is the correct answer that you are able to see? फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए, फटाफट से इसका सही जवाब बताइए. What is the correct answer over here? और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आई विल गिव इट टू यू, ये जो एमपीपीसीएस का आपका पीडीएफ है, आई विल गिव इट टू यू सो दैट यू कैन टेक अ लुक एट इट, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए माइथोस का क्या मतलब है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. अंजलि से लेकर देवश्री से लेकर दीक्षा से लेकर एवरीबडी इज गिवन द राइट आंसर. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. प्लॉट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, ठीक है? प्लॉट जो आपका है, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. माइथॉस इज एसोसिएटेड विद प्लॉट. माइथॉस किससे एसोसिएटेड है? माइथॉस इज समथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद प्लॉट ऑल टुगेदर. ये आपका शेक्सपियर के कौन से प्ले में ईडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट होता है? ईडिपस कॉम्प्लेक्स कौन से प्ले में रिफ्लेक्ट होता है? ये पूरे क्वेश्चंस है, देयर अबाउट 140 क्वेश्चंस जो 2017 के एमपीपीसीएस क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था. आई विल शेयर द क्वेश्चन बैंक विद यू आज की क्लास के बाद, मतलब आज क्लास खत्म होते ही आप उस पीडीएफ को पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा कल की क्लास से पहले. जस्ट गो ओवर इट. वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर. वेयर आर वी एबल टू सी हैमलेट, ठीक है? वेयर आर वी एबल टू सी हैमलेट के अंदर. वेरी गुड. What describes Bunyan's Pilgrim's Progress? बनियन का जो Pilgrim's Progress है उसको क्या कहा जाता है? What is it famously called? बनियन का Pilgrim's Progress जो आपका आता है, जॉन बनियन का वैसे भी Grace Abounding also you should be knowing, right? So when we are talking about Grace Abounding, the spiritual autobiography that he is writing, Bunyan was imprisoned, how he was put into the prison altogether, you should keep that in mind. Yes, it is an allegory of ideas. It is an allegory of ideas. उल्टा बनियन के वर्क को कहा जाता है that he was inspired by Saint Augustine's work. It is an allegory. Allegory has parallel meaning. ऊपर का लेवल कुछ और है, दूसरा कुछ और है. मोरालिटी प्लेस में भी हम लोग क्या देख पा रहे थे? मोरालिटी प्लेस में भी we were able to see allegory. So allegory is absolutely the right answer over here. ओके, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड. आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं. तो बेसिक रिविजन भी अगर आपने अच्छे से करी होगी, आपका पेपर 2 डेफिनेटली निकलेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी रॉकेट साइंस. काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे. हु द राइटर हूज रिटन द वे ऑफ द वर्ल्ड. आपका जो वे ऑफ द वर्ल्ड है ये कहाँ पर आपका आ रहा है? विलियम कॉन्ग्रीव इज राइटिंग इट. ही इज अ पार्ट ऑफ द किट कैट क्लब. आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से क्लब्स के ये मेंबर हैं. किट कैट क्लब, आपका स्क्रिबलर्स क्लब जो उस टाइम पे आ रहा है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है.
heroic couplet consists of, heroic couplet किसका consist करता है? Heroic couplet consists of, what is heroic couplet consisting of? What is heroic couplet consisting of? Heroic couplet is consisting of what? What are you able to see that the heroic couplet is consisting of? Iambic pentameter, right? What is it consisting of? It is consisting of your iambic pentameter. Iambic pentameter. अभी हम लोगों ने कहा था Walt Whitman, the poet of the open road, foundation batch की class में, we had said he is the pioneer of free verse, right? He is the pioneer of free words that we are able to see. तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. In which novels characters like Lalita and Saroja are found? Lalita और सरोजा का जो characters है ये आपको कहाँ पर मिलती हैं? Lalita and Saroja का जो character है. So when we are able to see the character of Lalita and Saroja, where are you able to find? Where are you able to find these characters? So when we are talking about Lalita as well as Saroja, ये आपको कहाँ पर characters मिलते हैं? Where are we able to see these characters all together? जल्दी बताइए, what is the correct answer over here? Absolutely right. Two Virginians, Kamala Markhandia, right? Kamala Markhandia का two virgins जो आपका है, two virgins आपका जो है, that is a work written by Kamala Markhandia. Nectar in the Sea. Kamala Markhandia is writing जिसमें ललिता और सरोजा दोनों का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर you will have to remember your Indian writers as well. How आपका Kamala Markhandia is coming? Kamala Markhandia is the one who's coming and she's writing two Virginians. जिसमें दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपकी ललिता एंड सरोजा का जो कैरेक्टर है वो आपका आ रहा है. यू कैन एक्चुअली टेक अ लुक एट इट. पेट्रियार्की एंड विमेन, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम्स है. ये जो आपका ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे. विमेन, इंडियन विमेन राइटर्स, राइट? जो आपके इंडियन विमेन राइटर्स हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यू विल हैव टू कवर योर इंडियन विमेन राइटर्स एज वेल, राइट? तो आपके इंडियन विमेन राइटर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो कॉल्ड. न्यू क्लासिकल एज को और कौन सा नाम दिया जाता है? व्हाट इज द अदर नेम दैट इज गिवन टू न्यू क्लासिकल एज? व्हाट इज द नेम दैट इज गिवन टू न्यू क्लासिकल एज? जल्दी से बताइए यहाँ पर व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर दैट वी आर एबल टू सी. So neoclassical age जो आपका आ रहा है, what is the correct answer over here? Augustan age, absolutely right. The age of scandal, right? The age of scandal that you are able to see. So women writers in India, ये मैं अपने लिए भी लिख लेती हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये मैं थोड़ा सा आपको नोट्स के फॉर्म में भी समझा दूंगी तो इट विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो अगेन न्यू क्लासिकल एज आपका ऑगस्टिन एज का दूसरा नाम है जैकोबस, प्यूरिटन एज, रेस्टोरेशन, ये आपके अलग हो जाते हैं. सो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, मूविंग ऑन. गॉथिक नॉवेल्स किससे डील करती हैं? गॉथिक नॉवेल्स किससे डील करती हैं? रिमेंबर अभी हम लोग कह रहे थे गॉथिक रोमांसेस इन द 19th सेंचुरी. वी वर इवन टॉकिंग अबाउट हाउ हाउथॉर्न भी यूज कर रहे हैं स्टाइल को. Okay, very good Maya, very nice. The age of prose and reason. Gothic novels, what are they dealing with? What are Gothic novels dealing with? They are dealing with horror and suspense, right? What are Gothic novels dealing with? Gothic novels are dealing with horror and suspense, both. You are able to see that they are dealing with horror as well as suspense. That is something that you are able to largely see. ठीक है, तो ये प्लीज आप याद रखिएगा. Did he who made the lamp made thee? Did he who made the lamp made thee? ये कहाँ पर लाइंस आ रही हैं? अभी the first writer that we spoke about, the sui generis writer, very important words that we had spoken about. Abhi starting mein, what was the work that we had looked at? So when we were starting, when we were revising, what did I tell you, right? A prophet is a seer, not an arbitrary dictator. A prophet is a seer, not an arbitrary dictator. ये कौन दे रहा है? विलियम ब्लेक दे रहे हैं, right? So Blake is the one who's writing Mind Forged Manacles. ये मैंने आपको कल भी बताया था. Blake का आपका Mind Forged Manacles, Mind Forged Manacles, right? Mind Forged Manacles जो आपका आ जाता है, जो Blake आपको बता रहे हैं. So you'll have to keep that in mind. To which poet does the following phrase apply? Willing suspension of disbelief. Willing suspension of disbelief. Willing suspension of disbelief is applicable to whom? Willing suspension of disbelief किससे एसोसिएटेड है? वेरी सिंपल. अगेन विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. बायोग्राफी या लिटरेरिया का हर एक पार्ट आपको पता होना चाहिए. कोलरिज के राइटिंग्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज कमिंग फ्रॉम कोलरिज. रमा मेहता का इनसाइड द हवेली के प्रोटैगनिस्ट कौन है? टू वर्जिनियंस, कमला मारखंडिया का और रमा मेहता का इनसाइड द हवेली. रमा मेहता का इनसाइड द हवेली, हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन रमा मेहताज इनसाइड द हवेली?
Rama Mehta is inside the Haveli. Who's the protagonist that we are able to see? Rama Mehta is inside the Haveli. यहाँ पर आपका protagonist कौन है? Who's the protagonist that we are able to see? The protagonist is Geeta, right? The protagonist is Geeta. Geeta is the protagonist. ठीक है? अगर ये Indian writers आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसको आपने अच्छी तरह से cover करना है. Adonis, a pastoral elegy, is written on the death of whom? By Shelley. Shelley ने ही किसके डेथ पे लिखी है? Adonis is written on the death of whom? Shelley के ना वैसे भी वर्क्स जो हैं सारे के सारे Shelley के वर्क्स, स्पेशली जो अननोन वर्क्स हैं, उनको आप करिएगा, ये पूछे जाता है. Shelley is an important writer altogether. Keats is absolutely the right answer. Okay, Keats is absolutely the right answer that you are able to see. Which poem by P.B. Shelley contains the lines, "Our sweetest songs are those that tell the saddest thought"? Our sweetest songs are those that tell the saddest thought. Our sweetest songs are those that tell the saddest thought. Which line? Where are you able to see? So when we are looking at P.B. Shelley, where are these lines coming in? P.B. Shelley, jaldi bataiye. This is to the skylark, right? To the skylark. Again, पीबी शैली मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, प्लीज शैली के सारे वर्क्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. शैली इज ऑफ कोर्स अनदर इंपॉर्टेंट राइटर. एसेज ऑफ इलिया किसने लिखा है? हु इज द राइटर राइटिंग एसेज ऑफ इलिया? एसेज ऑफ इलिया कौन लिख रहा है? बाकी भी जो एसेज ऑफ इलिया के अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट, जैसे चिमनी स्वीपर बाय चार्ल्स लैम्ब, तो प्रोज ऑफ रोमांटिक पीरियड, प्रोज जो आपका रोमांटिक पीरियड का आ रहा है, रोमांटिक प्रोज के ऊपर अच्छी तरह से, रोमांटिक प्रोज को अच्छी तरह से प्लीज कवर इट, राइट? योर रोमांटिक एज प्रोज, सो योर प्रोज राइटिंग्स दैट आर कमिंग, राइट? आपका जो प्रोज राइटिंग्स हैं विच आर कमिंग ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, ये आपको अच्छी तरह से कवर करनी है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रॉपरली लुक एट. ठीक है, रोमांटिक प्रोज राइटर्स इंपॉर्टेंट है. The Great Reform Act, which marks the beginning of the Victorian era, was passed by the British Parliament in. It is marking the starting of the British era. When is it starting? 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 Age of Reform, Victorian age को क्या बोला जाता है? Age of Reform, 3 रिफॉर्म बिल्स. पहला रिफॉर्म बिल कब आ रहा है? फर्स्ट रिफॉर्म बिल इज कमिंग यहाँ पर. मिडिल मार्च is set in 1832. Middle March, which according to Virginia Woolf is the only novel meant for adult readership. तो Great Reform Act जो आपका आ रहा है, that is marking the beginning of Victorian era. Please remember that, okay? In memoriam, Tennyson mourns the death of. Tennyson is mourning 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 the death of Arthur Hallam, right? Arthur Henry Hallam. ह्यू क्लार्क कैसे हो गया बच्चे? ह्यू क्लार्क कौन? टू फातिमा वगैरह बच्चे. ह्यू क्लार्क, आर्थर ह्यू क्लार्क तो आपका दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड हु इज कनेक्टेड विद हिम. थाइरीसियस इज रिटन ऑन ह्यू क्लार्क. तो ये आप प्लीज थोड़ा सा चेंज मत कीजिएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट. Which of Hardy's novels has the scene of the wife's auction? वाइफ का जो ऑक्शन का सीन है वो कौन से वर्क में है? नो वरी सुप्रतिम, वाइफ के ऑक्शन का सीन कौन से वर्क में है? वाइफ के ऑक्शन का सीन कहां पर आता है? ये सारे भी वैसे आपको पता होने चाहिए. इवन इफ यू कवर इट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, दैट्स फाइन. वेयर आर यू एबल टू सी? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, एब्सोल्युटली राइट. मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में. My Last Duchess is an example of what by Robert Browning? My Last Duchess is an example of what by Robert Browning? My Last Duchess is an example of what? Is an example of what? My Last Duchess is an example of what? My Last Duchess is an example of dramatic monologue. This is an example of dramatic monologue. Who was the leader of the pre-Raphaelite Brotherhood? Pre-Raphaelite Brotherhood को क्या बोला जाता है? Fleshly School of Poetry, right? Fleshly School of Poetry. Buchanan is calling it in a derogatory manner. They're also called painter poets. इनको क्या बोला जा रहा है? पेंटर पोएट्स भी बोला जा रहा है. द जर्म इज द मैगजीन दैट यू आर एबल टू सी. जैसे डायल इज द ट्रांसेंडेंटल मैगजीन, द जर्म इज देयर. डीजी रोसेटी, दांती गैब्रिएला रोसेटी is considered to be one of the pioneering leaders of the group. Who is the author of the popular tragic play Riders to the Sea? Riders to the Sea का who is the writer that we are talking about? Riders to the Sea, Riders to the Sea, Riders to the Sea. This is written by, Riders to the Sea is written by आयरिश लिटरेचर. आपको करना है. आज हम लोगों ने क्लास वो मास्टर क्लास में भी क्या करा था? बेक्ड,
Remember, Beck was an assistant friend comrade of James Joyce. अभी आज हम लोगों ने मास्टर क्लास में क्या करा था? सैम्यूल बेक द लास्ट मॉडर्न, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था सैम्यूल बेक द लास्ट मॉडर्न. आई होप यू आर एबल टू रिमेम्बर, मास्टर क्लास में करा है सैम्यूल बेक द लास्ट मॉडर्न. What is he associated with? He is associated as the friend of James Joyce, confidant of James Joyce. That is what you are able to see. So please remember that as well. Okay, quickly, which pessimistic poem by Philip Larkin is a meditation on the closeness of death, its randomness, and its inevitability? Right? Closeness, randomness, then inevitability. Which work are we talking about? Which work are we able to see? Which work are we able to see? ये बहुत ही important है. Philip Larkin. तो डैलन थॉमस का हम लोगों ने कल फर्नहिल कर लिया था. Dallin Thomas ka, I hope Fernhill you are all able to remember. Dallin Thomas ka Fernhill you are all able to remember. I hope that is coming. Ambulances, right? Ambulances. William Cullen Bryant अभी foundation batch में हम कर रहे हैं. William Cullen Bryant, the founder of American poetry, writing Thanatopsis, also associated with your fireside poets, schoolroom poets altogether. And Inca, what are you able to see? You're able to see transcendental group, optimistic, dark romances, pessimistic. So dark romances is a reaction against transcendentalism. So I hope आपको ये भी चीजें याद हो रही हैं. Who wrote the poem The Fall of Rome, which draws a comparison between fall of the Roman civilization and the decline of the modern? And the decline of the modern. Who has written this? Who has written this? The Fall of Rome. The Fall of Rome is a work written by Ambulances by Larkin. I hope it is clear. Ambulances by Larkin, Fernhill by Dallin Thomas, Welsh poet Dallin Thomas, Ambulances by Larkin that we looked at. Who's writing this poem, The Fall of Rome? Fall of Rome is by, very good, Shweta Padma, very good. This is W.H. Auden, right? This is W.H. Auden. In which poem do we find the lines, the words of a dead man are modified in guts of the living? Are modified in the guts of the living, right? You have distorted, right? You have almost distorted. You have almost distorted. तो कहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है? Where are we able to see? This is by W.H. Auden in memory of William Butler Yeats. In memory of William Butler Yeats. Supratim has got it right. In memory. Very good, Rani. No. So in memory of William Butler Yeats, aapka, this is of course coming in by W.H. Auden. Auden group of poets are also important. Auden group of poetry, also called your piling poets, right? That is what you're able to see. So W.H. Auden is also important, okay? Please remember. Whose painting is described in Thomas Gunn's poem in Santa Maria del Popolo? In Santa Maria del Popolo. In Santa Maria del Popolo. The painting is the conversion of Saint Paul. राइट द पेंटिंग इज कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल. पेंटिंग ये आपका आ रहा है, तो इसको आप एज इट इज एक लैंडस्केप पे लिख सकते हो. पीआरबी से आपके जो मॉडर्निज्म में भी पेंटिंग से इंस्पायर्ड है. माइकल एंजेलो इज राइट. माइकल एंजेलो इज राइट. Which poem ends, nothing has changed since I began, my eye has permitted no change, I am going to keep things like this, I am going to keep things like this, I am going to keep things like this. Where are we able to see these lines coming in? I am going to keep the things as it is. Where are you able to see this is coming in? So when we are looking at which work are we actually talking about, very important work by Ted Hughes that you're able to see. This is hawk roosting, right? This is hawk roosting that you're able to see. Okay, nothing has changed since I began. My eye has permitted no change. I'm going to keep things like this. Right? That is hawk roosting that we are able to look at. Moving on to the next question that we have. Which animal bird does Ted Hughes glorify as majestic and eminent in contrast to apes, parrots, tigers, lions, whose life, like those of contemporary men's societies, have become mechanized, reduced to mere biological function? Our lives have become mechanized, they've been reduced to biological function that we're talking about. Jaldi bataiye, what is the correct answer over here? Ek aisa, Ted Hughes ka animal poetry, the way Ted Hughes ki poetry, hawk roosting is of course important. Yes, Jaguar is right. Jaguar is right. Jaguar by Ted Hughes. So Ted Hughes is trying to say that Jaguar का mechanistic life नहीं है, mechanized life नहीं है, apes, parrots, lions का है, right? Apes, parrots, lions, tigers का है. Which is Ted Hughes' poem about writing a poem? Which is Ted Hughes' poem about writing a poem? Which is Ted Hughes' poem about writing a poem?
इट इज कॉल्ड थॉट फॉक्स, ठीक है। पोयम अबाउट राइटिंग अ पोयम, इट इज कॉल्ड थॉट फॉक्स, ठीक है। ये आपका थॉट फॉक्स है। मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, प्लीज एक बार सारा का सारा और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार ठीक तरीके से लिखिएगा और देखिएगा, ठीक है। Which English poet held fascism to be the end of the ancient tradition and broadcast fascist propaganda over Rome radio during the Second World War? During the Second World War, whom are we talking about? Whom are we talking about? Which English poet held fascism to be the end of the ancient tradition? The end of the ancient tradition, who said make it new, right? Who's also talking about make it new. He's also talking about make it new. Make it new ke bare mein bhi he's talking about. This is Ezra Pound, okay? This is Ezra Pound that we are able to see. This is Ezra Pound, okay? Which movement was co-founded by Ezra Pound as well as Wendaman Lewis? Wendaman Lewis and Ezra Pound कौन से मूवमेंट को टुगेदर कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट इजम्स, आपके जो मॉडर्न इजम्स हैं, आई कीप ऑन सेइंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। योर 20th सेंचुरी इजम्स, योर मॉडर्न इजम्स, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू कलेक्ट एंड रिमेंबर दैट। इट इज वॉटिसिज्म। देखो ऐसे मत कीजिए। वेंडमैन लुइस एज वेल एज एज़रा पाउंड बोथ टुगेदर आर एसोसिएटेड विद वॉटिसिज्म। Imagism is inspired by T. Hume. Wendelin Lewis also does a lot of contribution, but Vorticism is a movement that they take together. ठीक है? Ezra Pound's Huck, Sylvan, Mulberry comprises of how many poems? And ये same है. So आज I told you, ये आपका hint है to remember. आज foundation batch में what did we discuss? आज foundation batch में we had talked about that Walden. Walden is divided into how many chapters? It is divided into 18 chapters. Simplicity के बारे में बोल रहा है, remember? It is talking about self-reliance. What is Walden talking about? Self-reliance. It is talking about simplicity that we are able to see. ये hint है आपको इसको याद रखने के लिए. And here also Ezra Pound and Wendaman Lewis, the founders of Vorticism, they are, you know, so Ezra Pound's Huck, Sylvan, Mulberry is having 18 short poems. Okay, so please keep that in mind. Huck, Sylvan, Mulberry is having 18 works. Last question that we are having for all of you. Okay, last question that we are having for all of you. जल्दी बताइएगा. Which poem by Ezra Pound addresses his own alleged failure as a poet? Ezra Pound's own alleged failure as a poet. Ezra Pound's own alleged failure as a poet. So which poem by Ezra Pound addresses his own alleged failure as a poet? His own alleged failure as a poet. This is Huck, Sylvan, Mulberry, comprising of 18 short poems. Okay. Now, what I want all of you to do is, I want you to be very highly active. I'll share this PDF with all of you. This is, you know, your textbook PDF. ये इस तरह का दिखेगा. I will just show you also. तो इसमें सारे के सारे आपके answers पहले से ही हैं. Alright, all your answers are already there. So I will share this particular PDF with all of you. Please make sure that आप इस पूरे के पूरे MPPCS का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है 2017 का, ये पूरे क्वेश्चंस आपके पास होंगे. दिस इज हाउ यू नो दिस एक्चुअली वुड लुक लाइक. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस और नॉट. इसमें सारे के सारे आंसर्स भी हैं. यू विल बी एबल टू सी ऑल द आंसर्स आल्सो. सो आप एक बार, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू नो यू आर गोइंग ओवर इट. आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं. एंड जस्ट सिंपल क्वेश्चंस है. ऑल द क्वेश्चंस प्लीज टेक अ लुक एट इट एंड कम बिफोर टुमारोज क्लास. All right, and tomorrow of course there is something interesting that is planned up for all of you, but I want all of you to revise all the things that we've done so far and just make it a point that you know you're putting it together. So tomorrow I will catch up with all of you for your master class. Master class आपकी 10 बजे है, जिसमें हम गेट वर्कशीट को करेंगे. ठीक है, मास्टर क्लास में हम लोग आपकी गेट वर्कशीट को करेंगे. we'll be covering your gate worksheet and then I will catch up with all of you at 10:30 p.m. So this is the Republic Day Eve that we are talking about. ठीक है, this is your Republic Day Eve that we are talking about. Also अभी आपका एक वीडियो रिलीज होगा. lot of you have been asking questions कि क्या कभी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है. ये वीडियो ऑलमोस्ट बन गई है, तो आपको ये पता भी चल जाएगी. if there are other questions that you are having, please feel free to write to me on neerja.raheja@gmail.com or neerja.raheja.faculty@textbook.com. ठीक है, @textbook.com. please let me know if you need any support. जैसे ये वाला नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन हो गया या अपडेटेड सिलेबस का क्वेश्चन हो गया. सो
so that has been made, so we'll share it with all of you. Fine. Thanks everyone for joining. Thank you Debashish, Supratim, Maya, Shweta Padma, Kasturi, Upadhyay, Vishnu. Please revise all of these questions and come. In case if there are any other doubts that you may be having, then please keep me posted about that. Fine. Thank you so much everyone for joining in. Thanks so much. I will catch up with all of you tomorrow then. Fine. And classroom students, please don't forget to cover American romanticism and nationalism से कल हम लोग start करेंगे. Fine. Thank you everyone. Take care. Thank you.